Hi guys, क्या हाल है? So today is Saturday 15th of May. Hope you are having a nice weekend. In this video, I would like to speak about Asian Paints, but उसके पहले recently there have been a lot of new subscribers, so thank you for subscribing. I'm very close to 6,000 views as well, so I thank you for your support. So coming back to Asian Paints, exactly एक महीने पहले around 15 अप्रैल को या 16 अप्रैल को मैंने एक वीडियो बनाया था with my targets for this stock. I will put the link in the description so you can check out that video. It is a little more in detail. Um, Targets for the stock were 2700 and 2850. So 2700 and 2850. And in this video, I will not speak much about the stock, but just go straight into the numbers because this is a follow-up video. So this is yesterday's Friday's May 14th chart. Stock 8.5% up. ये गया all the way up till 2835, बट उसके बाद इसने क्लोजिंग दिया है 2772. सो बेसिकली 2800 को ये ब्रेक नहीं कर रहा है. ब्रेक मतलब सस्टेन नहीं कर पाया. ब्रेक इसने किया बट सस्टेन नहीं किया. 5 डे चार्ट यू कैन सी ये कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पर 2500 के लेवल पे और अब सीधा 2700 के लेवल पे आ गया है. एक महीने का चार्ट अगेन सेम, ये वही 2500 2600 के लेवल पे खेल रहा था, अब जाके 2770 पे है. नाउ 6 मंथ चार्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसका 52 वीक हाई इज 2873. तो ये 2835 तक गया बट 2850 2873 टच नहीं कर पाया. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. सो सीधी सी बात है, यहाँ से इसके पास इस ईयर में ब्रेक करने के लिए इट नीड्स अनदर 100 रुपीज अप्रोक्सीमेटली टू टच इट्स 52 वीक हाई और टू ब्रेक इट. सो ये स्टॉक एक दिन में 8% ऊपर क्यों था? आई एम प्रीटी श्योर मेनी ऑफ यू नो इट. दैट्स बिकॉज उसने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे अर्लियर दिस वीक. And I mean, I will put these links in the description. You can read it at your own pace. So basically, because 81% rise in consolidated net profit in Q4 of last year. So this is मोटा मोटी ये main reason है कि profit 81% बढ़ गया compared to the corresponding quarter in the previous year. ठीक है? So Asian paint stock shares rally most in a decade after Q4 results. So I mean, the headline is self-explanatory. ठीक है? तो आगे बढ़ते हुए, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टॉक इतना भाग गया है. इसके पास 100 रुपए का मतलब अप्रोक्सीमेटली 4-5% अप रूम है विद इन द 52 वीक हाई. सो व्हाट इज द प्लान नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट? ये स्टॉक और भागेगा, कंसोलिडेट करेगा या गिरेगा? I don't mean this specifically only on Monday. I mean in general in the short term. Long term, though, of course, everyone knows Asian Paints is a great stock, and ये गिरेगा तो भी वापस आएगा. It is the leading company in paints in India. So I mean, nobody is doubting कि long term में the stock will do well or not. That's kind of obvious and an assumption that yes, the stock is expected to do well in the long term. I am talking here more in the short term, मतलब next few weeks or the next couple of months. Okay, so let's see what the brokerages have to say. HSBC target 3150. Okay, Credit Suisse 2800, which is almost what the price is today. Goldman Sachs, very interesting, 1700. Good to know. ICICI Securities 2970, so say 3000. Okay. Next कौन है? Can Asian Paint stock sustain the momentum? This is by this gentleman from SBI. The bottom line is that he is not very optimistic. बाद में you can read about it. But the answer to his question is he's very cautious and he has not said no, but it means no. Motilal Oswal is also negative, you can say negative compared to today, क्योंकि आज स्टॉक है 2800 के लेवल पे, तो उस हिसाब से this fellow is saying मोतीलाल ओसवाल कि 2600 का टारगेट है इसका, so it's neutral. Okay. शेर खान is extremely optimistic like HSBC 3000 तक जाएगा. तो मतलब it's very interesting कि स्टॉक में काफी varied views हैं. It's not that all are saying कि हाँ 2900 3000 1600 वाला भी है और 3000 3100 वाला भी है और average. I will discuss about the average also in a bit. ICICI Securities 2750, which is also lower than today's price. Okay. Now, this is a good part of Axis. 39 analysts have covered the stock and the average is 2600, which is not very surprising given the ones I have not discussed 39 with you before. Almost 8 या 10 analysts का मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है और सबका average
आई वुड से इसी के हिसाब, इसी के आसपास है 2600, क्योंकि 1600 वाले भी हैं, 3000 वाले भी हैं, तो टारगेट प्राइस 2600. The reason I am discussing this now is because I am holding the stock, and I will tell you what my thought process is. I'm not saying this is the right thought process, but I will tell you what I plan to do. So this screenshot is from last night. Yesterday at 2790, okay, at 2790 I sold my stocks. So I booked at around 9% gross profit, mota moti, that I have already booked on Friday evening. Now, my plan of action for Monday morning, based on the summary of all this analysis, is I will wait for this stock behavior. अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, या अगर ये 2800 के आसपास गया, या मतलब सडन ने इसने जब मार्केट खुला और आधे घंटे में इसने सस्टेन किया अपना, मतलब 21% अप, 1.5% अप, सो देन आई विल buy the stock. If Asian Paints closes above 2800, then again I will buy more. Agar gir raha hai, to no problem, nothing to lose. I am not in a rush to re-enter the stock. But if the bullish momentum continues, I will buy. If the stock closes above 2800, I will buy. So this is the plan for Monday. अगर गिरता है, no problem. गिरेगा तो फिर गिरने दो, जब संभलेगा तब देखा जाएगा. And option chain is also very interesting. 2770 पे है, तो ऑब्वियस सीधी सी बात है कि 2800 पे 1.2 ऑलमोस्ट मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है. सॉरी, सेकंड मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है 2800 पे. नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि अगर इसने 2800 के ऊपर ब्रेक किया, फिर द नेक्स्ट हाईएस्ट, और द हाईएस्ट रादर इज एट 3000. मतलब सिंपल लैंग्वेज में 2800 अगर इसने ब्रेक किया, सो देन 2900 पे नहीं, 3000 पे the option traders are betting, speculating that it will reach 3000. तो बस इसने ये 2800 ब्रेक करना है. एंड दैट इज हाउ आई सी इट एज वेल, कि इसने अगर 2800 ब्रेक किया, तब ये 3000 तक जाने के लिए तैयार है. एंड शेर खान एंड HSBC एंड को आर राइट. गिरता है, so then of course ICICI and Goldman Sachs and those guys are right. So let's see how the stock behaves. I am not going to guess कि मंडे को क्या होगा. I will just behave or take decisions according to how the stock behaves on Monday morning. So that's my plan of action. So please do share your points as well about Asian Paints, what you think and what your plan of action is. I would love to learn from you as well. And yeah, if possible, please do like and subscribe. Thanks a lot, guys. And till the next time. Bye bye.